Assalamu alaikum. Hello. Welcome to another lesson in Theory Made Easy. So we'll begin by doing question 5 today. So what does this curved arrow road marking mean? ये जो पिक्चर पे आपको नजर आ रही है curved arrow थोड़ी सी slanted है उसका क्या मतलब है? Heavy vehicles should take the next road on the left to avoid a weight limit. So जो बड़ी गाड़ियां या भारी गाड़ियां जैसे ट्रक वगैरह है उनको नेक्स्ट रोड शुड टेक द नेक्स्ट रोड अगला रोड ले लेना चाहिए टू अवॉइड अ वेट लिमिट क्योंकि कुछ रोड जो होते हैं ना वो वेट लिमिट होता है कि अगर इस वेट से ज्यादा आपकी गाड़ी हो तो आप उस रोड पे नहीं सफर कर सकते तो आप कोई और रोड ले लें The road ahead bends to the left. So जो आगे रोड आ रहा है वो थोड़ा सा लेफ्ट पे slightly bend होता है curve है उसमें Overtaking traffic should move back to the left. यहाँ जो overtaking traffic है उसे वापस अपनी लेन में आ जाना चाहिए Okay. Or the last one is the road ahead has a camber to the left. So camber basically means कि थोड़ी सी ऊंचाई है रोड में ठीक है That's what it means. So the road ahead has a camber to the left. So आगे जो रोड आ रहा है उसमें थोड़ी सी ऊंचाई आ रही है So explain answer. Let's see and then we can see. In this picture जो आपने देखी है the road marking shows that overtaking drivers or riders need to return to the left. So जो आरो आपको नजर आ रही है उसका ये मतलब है कि जो ड्राइवर्स ओवरटेक कर रहे हैं या राइडर्स मतलब है कि मोटर बाइक वाले उनको वापस अपनी साइड पे आ जाना चाहिए These markings show the direction drivers must pass hatch markings or solid double white lines. So ये markings show करती हैं कि drivers must pass hatch markings जो markings बनी होती हैं या solid double white lines के आगे solid double white lines आ रही हैं और जब solid double white lines आएंगी तो उसका मतलब है कि आप overtake नहीं कर सकते कि दूसरी साइड पे नहीं जा सकते They're also used to show the route that high vehicles should take under a low arched bridge. और ये जो arrows होते हैं इनका excuse me ये जो arrows होती हैं उनका एक मकसद ये भी होता है कि जो high vehicles हैं जैसे ट्रक बड़े बड़े ऊंचे ट्रक्स हैं उनको कौन सा रूट लेना चाहिए क्योंकि आगे शायद एक लो ब्रिज आ रही है जिधर से ट्रक नहीं गुजर सकता या डबल डेकर बस है वो नहीं गुजर सकती So the answer would be overtaking traffic should move back to the left. जो overtaking traffic है उसे वापस अपनी लेन में आ जाना चाहिए. Okay, so next question. When do windscreen pillars cause a serious obstruction to your view? So we've got a couple of words in here, new ones here. So when do windscreen pillars? Windscreen pillars होती हैं so windscreen तो होगी जो बड़ा सा शीशा है आपकी गाड़ी के आगे that's a windscreen so pillars होते हैं साइड पे जो उस चीज को ऊपर उठाती है So when do windscreen pillars cause a serious obstruction to your view? So ये किस वक्त आपके व्यू में रुकावट बन सकते हैं When you're driving on a motorway, जब आप motorway पे drive करने हैं, when you're driving on a dual carriageway, या आप dual carriageway पे drive कर रहे हैं, when you're approaching a one-way street, या जब आप one-way street में जा रहे हैं, or when you're approaching bends and junctions, या जब road में bend आ रहा है ये junction. So let's just start with some of these words. So dual carriageway. Dual carriageway is a bit like a motorway, but it has two lanes. Two for going और two for coming. So दोनों तरफ से दो गाड़ियां होती हैं उनको dual carriageway बोलते हैं आम रोड जो होते हैं वो single carriageway होते हैं junction so junction is any road जहां आप stop करते हैं दूसरा रोड लेने के लिए so junctions are basically everywhere windscreen pillars can obstruct your view
particularly at bends and junctions. So windscreen pillars जो हैं वो आपकी व्यू में रुकावट बन सकते हैं bends and junctions में. Look out for other road users. आपको दूसरे road users को भी देखना पड़ेगा, especially cyclists, motorcyclists and pedestrians who can easily be overlooked. So जो cyclist हैं या motorcyclist या pedestrian हैं वो उसमें छुप सकते हैं. कोई van है या कोई truck है तो वो obviously उसमें नहीं छुप सकेगा. So just to give you an idea, so this in the small picture, I hope you can see it. This is a windscreen pillar. Yeah. So they're on both sides. So जब आप जंक्शन में होते हैं ना, so कोई पेडेस्ट्रियन हो या साइक्लिस्ट हो तो उसमें उसको देखने में रुकावट बन सकती है. So if we go back, so it will be when you're approaching bends and junctions. Click that. Next question. What's most likely to distract you while you're driving? So सबसे कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है जब आप ड्राइव कर रहे हो. सो लाइक आई सेड बिफोर, पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन. अपने आप को उस सिचुएशन में डालें कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और कौन सी चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है. इज इट यूजिंग अ मोबाइल फोन, यूजिंग द विंडस्क्रीन वाइपर्स, यूजिंग द डिमिस्टर्स or using the mirrors? So just let's talk about demisters. Demisters होते हैं जो पंखा ऑन करते हैं आप जब सर्दियों में गाड़ी फॉगी हो जाती है ना और आप डिमिस्टर्स यूज करते हैं. बेसिकली पंखा जो चलाते हैं उसको डिमिस्टर बोलते हैं. Explain answer. Except for emergencies, it's illegal to use a handheld mobile phone while you're driving. So अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर इलीगल है कि आप एक हैंड हेल्ड मोबाइल फोन यूज करें जब आप गाड़ी चला रहे हैं. Even using a hands-free kick can severely distract your attention. So कुछ गाड़ियों में, especially nowadays, the new cars, you can use a hands-free system where you can connect your phone to the car and आपको गाड़ी के स्पीकर्स में फिर जिसके साथ आप बात करें उसमें से आवाज आएगी. वो कह रही हैं कि वो भी आपकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं. So using a mobile phone. Next question. You're turning right onto a dual carriageway. What should you do before emerging? So ये आपकी गाड़ी है, आप एक ड्यूअल कैरिजवे पे जा रहे हैं. सो आप देखें 2 लेन बनी हुई हैं इस तरफ से आने वाली गाड़ियों के लिए और 2 लेन बने हुए हैं उस तरफ दूसरी तरफ जाने के लिए. तो आप क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे, अप्लाई द पार्किंग ब्रेक व्हिच इज द हैंड ब्रेक एंड देन सेलेक्ट अ लो गियर. लो गियर सेलेक्ट करेंगे. Position your vehicle well to the left of the side road. So आप अपनी गाड़ी की पोजीशनिंग जो है वो काफी लेफ्ट साइड पे करेंगे. Like इसको थोड़ा सा इधर और करेंगे. Check that the central reservation is wide enough for your vehicle. यहाँ आप चेक करेंगे कि ये जो सेंट्रल रिजर्वेशन है ना, ये जो थोड़ी सी जगह बनी हुई है जिधर आपने आके वेट करेंगे कि आपकी गाड़ी आया इसमें फिट आ सकेगी या नहीं आ सकेगी. Or make sure that you leave enough room for a vehicle behind. या आप make sure करेंगे कि आप काफी जगह छोड़ दें जब आप इधर वेट कर रहे हैं कि पीछे से एक गाड़ी निकल जाए. So if we going to explain answer, before emerging right onto a dual carriageway. So emerging का मतलब होता है कि join करना या निकलना, उस रोड पे निकलना. Before emerging right onto a dual carriageway, make sure that the central reservation is deep enough to protect your vehicle. अगर आपको सेंट्रल रिजर्वेशन में वेट करना पड़े तो आपको चाहिए कि आपकी उतनी जगह है कि आपकी गाड़ी उसमें फिट आ जाए. जैसे कि अगर आपके पास गाड़ी काफी बड़ी वन है या बड़ा ट्रक है तो ऑब्वियसली वो तो नहीं फिट आएगी. तो फिर आपने दोनों साइड से रोड क्लियर होनी है तो फिर आप जा सकते हैं. अगर आपकी गाड़ी छोटी है तो फिर आप उस जगह पे जाके वेट कर सकते हैं. एक साइड से रोड क्लियर है, आप उधर जाके वेट करें और फिर दूसरी साइड से
देखिए जब रोड क्लियर होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. यू शुड ट्रीट द ड्यूअल कैरिज वे एज वन रोड. सो अगर आपकी गाड़ी बड़ी है तो आपने ड्यूअल कैरिज वे को एक रोड की तरह देखना है, जैसे हमने अभी बात की है. Neglecting to do this, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, could place part or all of your vehicle in the path of approaching traffic and cause a collision. So अगर आप हो सकता है कि आप अपने आप को या दूसरों को खतरे में डालें और आपका एक्सीडेंट भी हो जाए. Cause a collision. Collision basically means टकराव. So the answer would be check that the central reservation is wide enough for your vehicle कि ये जो जगह है इसमें आपकी गाड़ी पूरी तरह आ सकेगी और ये जो गाड़ियां इधर से आ रही हैं इनको कोई खतरा नहीं है या आपको नहीं खतरा कि ये आपसे आके टकराएंगे. Right, so please like, share and subscribe and leave a comment below and I will see you in the next video.